Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, today we will start unit number 10, Habitat, and today is its first lesson. I have given you a complete introduction of this lesson. Today we will start its first lesson. So my dear students, let's quickly do an activity before we will move forward towards the main lesson. So quickly tell me, what is this? Sun. Very good. So this sun is a source of heat and light on our earth. और इसकी वजह से आपके अर्थ पे आपको जो जो चीज़ें नज़र आती हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर सन. आपको प्लांट्स नज़र आते हैं, आपको एनिमल्स नज़र आते हैं, आपको different types of birds नज़र आते हैं, fish नज़र आती हैं. So these all animals, these all plants, your earth, the climate की वजह से ideal climate है यहाँ पर, ideal heat and light है because of the presence of sun. और ये सब कुछ क्यों possible है? क्योंकि हमारा जो planet earth है, it is at an ideal distance from the It is at an ideal distance from the sun. सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो एक आइडियल लेवल पे है, जिसकी वजह से यहाँ पर अप्रोप्रिएट हीट और लाइट आती है, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. इसी तरह जितने भी एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है. सो सन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑन आवर अर्थ to sustain life here. So let's quickly look at the student learning outcome given on page number 81. So the students will be able to recognize that heat and light of sun help to sustain life on earth, which is the only planet where life exists. So आज ये सब बच्चे जो हैं वो जान जाएंगे कि सन की वजह से ही लाइफ जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, और अर्थ जो है वो ऐसा प्लैनेट है, इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, where there are plants, animals, human beings, और एक ideal environment है to sustain life. So my dear students, let's quickly move forward towards the Islamic perspective. He created the heavens and earth with truth. He wraps the night around the day and wraps the day around the night, and has made the sun and moon subservient, each one running for a specified term. Is he not indeed the Almighty, the endlessly forgiven? So sun जो है अल्लाह ताला ने उसको इतना इम्पॉर्टेंट बनाया है क्योंकि आपको पता है कि दिन और रात जो हैं वो सूरज के आने और जाने की वजह से होते हैं, और अल्लाह ताला ने ही उसको इस तरीके से बनाया है कि दिन टाइम सूरज निकलता है, रात के टाइम पे चांद आ जाता है. सो ये तमाम जो हैं ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए. So let's quickly move forward towards pre-reading question. Imagine the world without sun. Tell 5 changes would occur then. Quickly think. सोचे ज़रा, give it a thought कि अगर सूरज ना हो, बिल्कुल भी ना हो, तो which 5 changes will occur? Number 1, no light. Number 2, no heat. Number 3, no ideal temperature here. There will be snow here everywhere, and then there will be no life here. Why there will be no life? ये मैं अभी आपको जब हम lecture start करेंगे, reading start करेंगे, I will discuss it in detail. So my dear students, let's quickly open page number 82 in our books. Pause the video and open page number 82. I hope everybody has opened page number 82 in their books. Now quickly look at the picture here. You can see a tree and a giraffe is eating leaves of the tree. So, कैसे जो है sun जो है वो important है, और कैसे सारे जो हैं वो आपस में connected हैं. The trees जो हैं they prepare their food in the presence of sunlight. और जो process होता है जिससे plants जो हैं अपना food prepare करते हैं, that process is called photosynthesis. ठीक है? The heat and light of sun is used by plants for making their food. This is photosynthesis. अब जो animals हैं they eat leaves from the plant. ठीक है? जो plant eating animals हैं वो plant के leaves को खा रहे हैं. अब जो meat eating animals हैं वो इस animal को खाएंगे, और इसी तरीके से जो है ये cycle continue रहेगा. अगर sun नहीं निकलेगा, if the sun will not come out,
there will be no plants. So animals cannot survive. उनको food नहीं मिलेगा, उनको oxygen नहीं मिलेगी. So हमारा planet जो है ultimately there will be no life on this planet. So sun is extremely important for the sustenance of life on earth. The heat and light of sun is directly and indirectly used by the animals for the development of their bodies. और plants को और animals को growth के लिए और development के लिए भी sunlight की ज़रूरत होती है. Life can exist if the temperature is suitable. The optimum temperature obtained by the sun favors plants' growth and animals' development. और suitable temperature जो है, ideal distance जो है earth का sun से, that helps and to maintain an ideal temperature on our planet, जिसकी वजह से plants or animals or human beings all can survive here. So my dear students, let's quickly look at here, think about it. What is the relation between heat of the sun and water availability and quality? अब सूरज का पानी से क्या लेना देना है? Water is also a very important resource, ठीक है? तो पानी और सूरज आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? अभी हमने एनिमल्स के बारे में भी कनेक्शन पढ़ लिया, प्लांट्स के बारे में भी कनेक्शन पढ़ लिया, बिकॉज इफ देयर विल बी नो सनलाइट देयर विल बी नो प्लांट्स मीन्स नो ऑक्सीजन एंड नो फूड, सो अल्टीमेटली नो लाइफ. इसी तरह वाटर जो है वो भी सन से कनेक्टेड है. कैसे? लेट मी क्विकली टेल यू. आपकी जो स्नो माउंटेन्स के ऊपर होती है, दैट इज मेल्टेड बाय द लाइट और द हीट ऑफ द सन, जिसकी वजह से आपको क्लीन वाटर जो है आपके रिवर्स में, पॉन्ड्स में और स्ट्रीम्स में आता है. और फिर यही वाटर जो है इट इज एवेपोरेटेड बाय द सनलाइट, जिसकी वजह से वो वापस ऊपर जाता है, फिर से बादल बनते हैं, फिर से बारिश होती है और स्नो होती है, और ये साइकिल चलता रहता है. तो अगेन यहाँ पर सन जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सो ये रिसोर्सेज भी जो है ये आपस में कनेक्टेड हैं. टू ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, 3 बल्कि, सन, एयर, वाटर, ऑल आर कनेक्टेड. ओके, सो सन देख लें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विदाउट सन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट. So my dear students, again let's move forward towards your reading page. So quickly put your fingers where I will read. Sun supports life. Earth is the only planet that supports life. Did you ever think why? The environmental conditions on Earth satisfy the necessities of all life forms. The most important of them are suitable temperature, appropriate light, availability of water and life gases. The sun maintains all these conditions owing to its ideal distance between the earth and itself. So my dear students, earth, sun जो है वो बहुत important है लाइफ को सस्टेन करने के लिए. क्यों? कैसे? क्योंकि अर्थ जो है, सन जो है वो हमें लाइट दे रहा है, हीट दे रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फूड. इसी तरीके से लाइफ कैसे अर्थ पे एग्जिस्ट करती है? बिकॉज ऑफ वाटर, लाइफ गैसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, और इन चीज़ों की वजह से हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है अर्थ के ऊपर. और ये सब चीज़ें जो हैं ये सन के साथ कनेक्टेड हैं. इज दैट क्लियर? सन हमें लाइट भी दे रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी में भी हेल्प कर रहा है, एयर भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो एंड प्रिपेयर इट्स फूड एंड देन दे गिव ऑक्सीजन. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सन. और सन कैसे हमें जो है वो आइडियल है हमारे अर्थ के लिए? क्योंकि ये सन से एक आइडियल डिस्टेंस पे है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, ना बहुत करीब है, ना बहुत दूर है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, again let's quickly move towards the reading. Humans also enjoy the benefits of the sun, that is moderate climate and light. Besides temperature and light, they depend upon food from plants and animal sources, hence share the energy of the sun. So my dear students, आपने देखा कि कैसे जो है वो सनलाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो खाना ले रहे हैं प्लांट्स से, प्लांट्स को सन
जो है वो ग्रो करने में, फूड प्रिपेयरिंग में हेल्प कर रहा है. दे ऑल्सो गेट इट फ्रॉम द एनिमल्स. इसके अलावा मॉडरेट हीट एंड लाइट ऑल्सो हेल्प देम आउट. सो सन इज extremely important for the sustenance of life on earth. Now, my dear students, let's quickly move towards the practice. For that, quickly open page number 97 in your books. I hope everybody has opened page number 97 in their books. Now we will do the writing practice. Question number 1 will be done. You can see it on your screen. Here is question number 1. Why is sunlight an essential source of life sustenance on earth? Sunlight कैसे जो है वो एक important source है कि वो life को sustain करती है या life को support करती है earth के ऊपर. So I will tell you the answer again. Keep thinking and then write it down in your notebooks. It is ideal, the earth is at an ideal distance from the sun. It helps the plants in making their food, which supports air. And it also supports all the conditions for the support of life, that is water, life gases, ideal temperature, ideal light. So these are all the things or the requirements for the life. Now, my dear students, here is your worksheet number 1, which will be provided to you by your teacher. You will write down your name and your class at the top. And here is your writing activity. Write down at least 3 benefits of sun. आपको 3 benefits लिखने हैं sun के, heat, light and helps the plant in preparing the food. What would happen? What would have happened to earth if there were no sun? अगर sun ना होता तो क्या होता? ये हम discuss कर चुके हैं. Write it down. Name the processes by which Name the process which helps plants in making food by नहीं आएगा यहाँ पर, which helps plant in making food. तो आपको वो process का नाम लिखना है जो plants को food preparation में help करता है. That is photosynthesis. Photosynthesis. Very good. So, my dear students, these are the 3 questions which you will do in your worksheet. You can pause the video and you can complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now we will move forward towards your evaluation given on page number 95. Quickly answer these 3 questions. On which planet life exists? Very good. Earth. Why does life exist only on Earth? Because of the suitable conditions. Name the environmental conditions that supports life. Sun, ideal light and temperature, then water, life gases. They support the life on earth. Very good. Now we will move forward towards your homework. So for your homework, you will do independent activity number 1 on your book given on page number 82. How is the child in the room consuming energy of the sun? Now you can see the child is eating and he is inside his room. And how is he consuming the energy of the sun? Very easy. He is eating his salad. So it comes from the plant. The plant has prepared the food with the help of the energy of the sun. So indirectly, he is consuming the energy of the sun. Very easy. You just have to write it down in your own words. And another home activity number 1 will be done by you. Do you think that sun is a blessing? Give your opinion in a paragraph. क्या sun आपके लिए एक blessing है? कैसे? क्यों? Write it down in a paragraph. Very easy. So my dear students, with this we will move forward towards the wrap up. Life on earth has become possible due to the suitable temperature and light provided by the sun. Other environmental conditions necessary to sustain life on earth are water, food and life gases. So my dear students, now you all are able to tell and recognize that sun is a very important source and it helps to sustain life on earth. Keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.